So in our lecture today, we would be describing a new form of market called as monopolistic competition. Monopolistic competition. Now, I would say monopolistic competition refers to the market structure where there are large number of buyers and sellers dealing in differentiated products. Large number of buyers and sellers dealing in differentiated products. तो ये जो पार्ट है इसके मीनिंग को we would describe more in details under the part called as features. Under the part called as features, we will describe it more in details. So let us describe features. Now, what are the features of monopolistic competition? The very first feature of monopolistic competition, as the meaning says, large number of buyers. In a monopolistic competitive market, the number of sellers are so large, sorry, the number of buyers are so large that I can say demand of a single buyer, demand of a single buyer constitutes small proportion of market demand. It constitutes a small proportion of market demand.
hold on for a minute. Okay, so large number of buyers. The number of buyers are so large that a single buyer will constitute just a small proportion of the entire market demand. And एक important चीज वहां पे याद रखना that in this market a single buyer cannot influence the market. A single buyer cannot influence the market. A single buyer will not be able to influence the market. It would be influenced by all the buyers combinedly. Collectively they can, but individually they can't. Second one is large number of sellers. Large number of sellers. Again, in this market, the number of sellers are so large that supply of a single seller constitutes a small proportion of market supply. That is, again, in this market, a single seller cannot influence the market. A single seller will not be able to influence the market. Collectively, all the sellers can influence the market. ये दो फीचर हो गए. इसका थर्ड फीचर है differentiated product. Now, what do we exactly mean by differentiated product? यहाँ पे in this market या जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है, बट मतलब they will have exact same type of utility, but they are not the same product. उनका यूटिलिटी सेम रहेगा, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट. अभी आज जैसे वी टेक एग्जांपल ऑफ सोप, साबुन. सी, डेटॉल हो, लाइफ बॉय हो, संतूर हो या डव हो, यूटिलिटी सबका सेम है. यूटिलिटी इज सेम, बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. That is called product differentiation. The products would be differentiated on the basis of brand, on the basis of, in fact, I can say features, etc. And यहाँ पे एक सबसे important चीज याद रखो आप कि the products are close substitutes. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें.
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। The products are close substitutes of each other. In this market, the products are close substitutes of each other. मतलब एक प्रोडक्ट हमको डेटॉल नहीं मिला तो लाइफ बॉय ले लिया, लाइफ बॉय नहीं मिला संतूर ले लिया, संतूर नहीं मिला तो हमने XYZ कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट ले लिया. The products are close substitutes of each other. Then fourth one, free entry and exit. In this market, the sellers will have free entry and exit. That means the seller can buy the product. No, sorry, the seller can enter into the market whenever he finds profit and can exit from the market whenever he finds out that there is a loss into this type of market. Then in this type of market, there are no restrictions on seller. No restrictions on seller to enter और एग्जिट फ्रॉम मार्केट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस मार्केट का. नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सेलर फॉर एंट्री एंड एग्जिट. द नेक्स्ट वन, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट. अभी यहाँ पे मेरा आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सेलिंग कॉस्ट क्या है? सेलिंग कॉस्ट, I can say the cost involved on advertisement, sales, exhibition, etc. ऐसे जो खर्चे होते हैं, they are called as selling cost. तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है. एंड एज द प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, we can see that in this type of market, there is huge selling cost. Hello, am I audible? Okay. See, I may not be able to read your comments and all those things because today I have just logged in only from one computer. So huge selling cost will be there because the products are close substitutes. And यहाँ पे सबसे important part है interdependence. In this type of market, the sellers would be interdependent on each other. They are seller and buyer दोनों एक दूसरे पे dependent रहेंगे. The seller and buyer will be interdependent on each other, and particularly sellers एक दूसरे पे dependent रहते हैं. So this is about features of monopolistic competition. And यहाँ पे
equilibrium of monopolistic competition equilibrium of monopolistic competition इक्विलिब्रियम के दो ही इक्वेशंस है मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मस्ट इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि equilibrium of monopolistic competition is